all in Sgoi online class, and this is your biology class. Students, in my previous video, we started the unit 2, that is communicable disease, and already discussed some viral disease and some bacterial disease like cholera and tuberculosis. Now the next bacterial disease is the typhoid. So this disease, typhoid, is a bacterial disease which is caused by the bacteria Salmonella typhi. This is the name of the bacteria which causes the disease typhoid. And what is the symptom of this disease? The continued fever, means continuously आपके body का temperature high होता है, there is a fever and slow pulse rate slow हो जाती है, then there is a intestines are affected. इस disease में हमारी जो intestine होती है वो affect होती है because it is this disease is caused by the contamination of food. Food की contamination से होने वाली disease है, that's why our intestines are affected by this disease. And what are the mode of transmission? The disease are transmitted by the contaminated food. And the preventive measures. What are the preventive measures of this disease? That is proper sanitization. Human waste and excreta should be deposited in a covered place away from the water sources. जो भी water sources हैं उनसे अलग हटके excreta और जो waste हैं उन सबको अलग deposit करना चाहिए, अलग डिपॉजिट होना चाहिए इन सबका. ओके. एंड द कंट्रोल ऑफ फ्लाइज को कंट्रोल करना चाहिए. जितने भी फ्लाइज डिजीज कॉज करती हैं उनकी कंट्रोल, उनके लिए स्प्रे का यूज करना चाहिए टू दैट फ्लाइज. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज द डिप्थेरिया. सो द थर्ड एंड फोर्थ डिजीज इज diphtheria. This diphtheria disease is caused by the diphtheria disease is caused by the bacteria Corynebacterium. This is the name of the bacteria which causes the disease diphtheria. And this Corynebacterium, what are the symptoms of this disease? The symptoms of diphtheria is initially slight fever. बॉडी में लाइट टेम्परेचर होता है, हल्का सा फीवर होता है और थ्रोट इन्फेक्शन होता है. जनरली डिस्कम्फर्टनेस होती है बिकॉज ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन. एंड अगर ये टाइम पे ट्रीट नहीं किया, इट इज नॉट ट्रीटेड एट टाइम, देन choking of the throat and difficulty in the breathing occurs. And the mode of transmission is the air. That's why it is also known as airborne disease. And the preventive measures are the DPT vaccine. इसके लिए वैक्सीनेशन होता है DPT vaccine. DPT vaccine. And the full form of this vaccine is the diphtheria pertussis tetanus. The full form of the DPT is the diphtheria pertussis tetanus. Next disease is the plague. Plague is next bacterial disease which is caused by rat. Rat से cause होने वाले disease है. That means not कि rat इसे cause कर रहा है. Means जो bacteria है वो कहाँ पर होता है? Rat की body में. It is transmitted from rat to rat और rat to humans. ये rat की body में रहने वाला bacteria होता है जो कि plague cause करता है. And the symptoms of this disease is a fever and chills. अचानक से टेम्परेचर राइज होता है और अचानक ही डिक्रीज हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर. मींस फीवर्स एंड चिल्स. एंड एक्सट्रीम वीकनेस फील होती है. देयर इज अ पेन इन द एब्डोमेन क्या होता है? द रीजन बिलो द स्टमक इज नोन एज एब्डोमेन. सो एब्डोमेन पेन होता है एंड द डायरिया एंड वॉमिटिंग. द डिजीज इज ट्रांसमिट बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज. इन्फेक्टेड फ्लीज से होती है. एंड ये जो फ्लीज होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रैट की बॉडी में रहते हैं. सो ये डिजीज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम रैट टू रैट बाय द ब्लड सकिंग ऑफ द फ्लीज. ये जो फ्लीज है रैट की बॉडी में रहते हैं, वो रैट का ब्लड सक करते हैं जिससे वो रैट में होने वाली डिजीज है. और रैट अगर किसी फूड के कांटेक्ट में आता है और वो फूड हम ईट करते हैं तो ये ह्यूमन में होने वाली डिजीज है. सो द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ दिस डिजीज इज द प्रॉपर सैनिटाइजेशन. प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना चाहिए जिससे कि रैट हमारे घर में ना हो.
Next, the disease which is caused by the protozoa. So protozoa से होने वाली disease है, that is malaria and dysentery. The first disease is malaria. Malaria, you know that malaria is caused by the biting of the mosquito. Mosquito से होने वाली disease है, and the symptoms of this disease is the high fever, headache, and violent shivering. That is the symptoms. And also one of the symptoms is the chills and fevers repeated on the third and fourth day. ये जो मलेरिया होता है इसमें थर्ड और फोर्थ डे तक कॉन्टिन्यूसली ये हल्का फुल्का फीवर आता है, फिर अचानक से बॉडी ठंडी हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स हैं मलेरिया के. एंड दिस डिजीज इज ट्रांसमिट बाय द बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो, बिकॉज this is a protozoal disease. Okay, and the preventive measures of this disease is the use of mosquito repellents and spray of oil on water in ponds, ditches to check breeding of mosquito. जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर मॉस्किटो को किल करने के लिए स्प्रे का यूज करना चाहिए और पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए फॉर किलिंग द मॉस्किटोज. नेक्स्ट डिजीज इज द डिसेंट्री. डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ which is caused by the contaminated food and water, and the symptoms of this disease is the abdominal pain in abdominal region में पेन होता है, diarrhea and discharge of mucus and sometimes blood in stools. And how this disease is transmitted? This disease is transmitted by the contamination water and food. The preventive measures of this disease is the proper sanitation, because this disease is caused by the contamination of food and water. That's why it is prevented by the proper sanitation, and the food and water must be covered and protected from the dust and fleas. जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं वो हमेशा ही कवर होना चाहिए, उसे डस्ट और फ्लाइज से प्रिवेंट करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय द worms. So worm से होने वाली डिजीज है, that is Ascariasis. Ascariasis is the disease. So the disease Ascariasis is caused by the roundworm. Roundworm means Ascaris. Ascaris is a roundworm. The name of the worm. Ascaris is the name of the worm which is found in our intestine. It's a roundworm which causes the disease Ascariasis. And the symptoms of this disease is the abdominal pain and indigestion, vomiting and diarrhea. Indigestion means when the food is not properly digested, that is called indigestion, vomiting, diarrhea. This is the symptoms of this disease. And the mode of transmission. How the disease is transmitted? Through unwashed raw vegetables which contain worms, egg. Children get it when they eat with unwashed hand. जब आप अनवॉश्ड हैंड से कोई भी फूड ईट करते हैं या अनवॉश्ड रॉ वेजिटेबल्स ईट करते हैं, दैट कॉज दिस डिजीज, बिकॉज दैट वेजिटेबल्स हैज द egg of the ascaris. That's why this disease is transmitted by the unwashed raw vegetables. And the preventive measures of this disease is the proper sanitation and the use of drug. If this disease are occurred, then use to prevent this disease is the drug. Okay. Next is the mode of transmission. Mode of transmission. So the communicable disease are transmitted from the source of infection to other persons or other living organisms by various modes. What is the modes of transmission? First is direct transmission and second is indirect transmission. So first is direct transmission. Indirect transmission means the direct contact. When the infection may be transmitted by the direct contact from skin to skin, or the disease transmitted by direct contact include leprosy, skin disease, eye infection. Okay, direct contact से होने वाली disease कौन सी है? First is direct contact. So the disease which is caused by the direct contact is the leprosy, eye infection,
And the skin disease, these diseases are caused by the direct contact. Next is the droplet infection. So next is a droplet infection. The direct spray of droplets of saliva during coughing, sneezing, and speaking, splitting. The bacteria are transmit. The bacteria and the organisms which cause a disease, pathogens are transmit from one person to another and cause a disease. Other disease which is caused by the droplet infection are the whooping cough, tuberculosis, and the next is the diphtheria and common cold. Common cold and diphtheria. And the next is the contact with soil. Contact with soil. So the disease which is caused by the contact with the soil are the tetanus, etc. So this is the disease which is caused by the direct contact of the soil. Next is the next disease, entry through skin. The disease which is transmitted by the organism, by the pathogen, direct entry through the skin. Sometimes the microorganisms may be introduced directly into the skin and they cause the disease. For example, rabies virus. रेबीज वायरस. रेबीज वायरस क्या है? डॉग की बाइटिंग से डायरेक्ट वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है स्किन से एंड दे कॉज द डिजीज रेबीज. सो रेबीज वायरस डॉग की बाइट से होता है. एंड हेपेटाइटिस बी वायरस इज आल्सो इनोकुलेटेड थ्रू द कंटामिनेटेड नीडल एंड सिरिंज. और जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो भी कंटामिनेटेड नीडल और सिरिंज से हमारी बॉडी में डायरेक्ट एंटर हो जाता है स्किन के थ्रू और ये डिजीज कॉज करता है, दैट इज हेपेटाइटिस बी. So these are the disease which is caused by the direct transmission. Next is the indirect transmission. We will discuss the indirect transmission in our next video. Okay students, thank you. Have a nice day.